Hello everyone, I am from EME Technologies. Welcome to our channel. If you haven't subscribed our channel, then please subscribe it. And for more updates, for more videos, please hit the bell icon button. Thank you. Tell me about yourself. My name is Ritu. I'm from Hoshiarpur and I am pursuing MC from Ravi University. I'm here because I'm pursuing internship here in PhD. And I have done my graduation from the Rajbara campus in Hoshiarpur within the 63%. Okay. So, what about your family? In my family, my grandmother and my father is a shopkeeper and my mother is housewife and my eldest brother pursuing BTech and my elder sister married. Okay. So, you have done your BCA or Yes. you have done plus two from PESP. What is PESP? Punjab School Education Education Board. School Board. Okay. So, in which stream you have done plus two? And in which economics and computer application and math. Okay. So, you have done your BCA from Rajbara Institute. Yes, ma'am. Why didn't you continue with the MCA? Rajbara Institute. There was not MCA. It was not MCA. Okay, and this institute in Hoshiarpur? Yes. Okay, so you have done your MCA. Yes. So, which technical skills do you know? PHP, HTML, CSS. Okay, so in MCA, you ever done any language? You have done any language in MCA? No, I didn't. No? You don't have any language subject in your MCA? कोई language subject? सॉरी एमसीए में हमें जावा था सी थी सी प्लस प्लस थी एंड पीएचपी एचटीएमएल Okay, do you know C? आर थी Do you know C? सी इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज Okay, tell me, do you know about any C language? C language is a programming language in which we can use loop if conditions Okay, and you just done only C or C plus plus? C. Just only C. You don't have any subject in C plus plus in MCA. Okay. So you in MCA, in which stream you are? Computer application. In which semester? You have a Sixth. semester. Sixth Sixth semester. semester. Okay. So you are doing a training in PHP, right? So why did you choose PHP? Because I have done two basic PHP internship, so that's why I want my continue with PHP. You do know what the PHP? What is PHP? PHP is a preprocessor hypertext, I think. Hyperlink. Okay. So anything else about the definition? कुछ और पता है इसके लिए? PHP मैम PHP का यूज़ हम सॉफ्टवेयर में करते हैं, जैसे कि कोई लाइव प्रोजेक्ट है, जैसे कि हम वो एप्स यूज़ कर ही रहे हैं अपने मोबाइल पे लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर में, तो उसमें उसका यूज़ होता है PHP का, तो इसका भी है इसका। अच्छा इसलिए अच्छा तो आप पीएचपी कर रहे हो, तो पीएचपी के लिए आपको क्या ज़रूरत है? पीएचपी करने के लिए किस बेसिक नीड की ज़रूरत है? PHP के लिए सी प्लस प्लस जे जावास्क्रिप्ट CSS का HTML का बेसिक होना चाहिए। एंड आपको एचटीएमएल के बारे में पता है? HTML का व्हाट इज एचटीएमएल? HTML is a hypertext language hypertext markup language. It's it's a HTML. So why do you use HTML? HTML basically used for web designing and program. Okay, so do you know about the versions of HTML? HTML 5. Okay, so how can we configure that this is HTML5 or this is HTML? हम कैसे पता करेंगे कि वो HTML5 का टैग यूज़ कर रहा है, वो HTML यूज़ कर रहा है?
प्रीवियस वर्जन। अगर आपके पास कोई दो कोड रख दिए जाएं नॉर्मल HTML का और HTML5 का, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ टैग यूज़ होते हैं HTML, कुछ टैग नए आते हैं जो HTML5 एडवांस में यूज़ होते हैं। उस पे ऊपर एक टैग आता है डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट। Okay, so can you write it here? What are the new tags in this? Exclamation sign, डॉक्यूमेंट। And what is the use of exclamation mark? Okay, so tell me about the new tags in HTML5. Or just tell me about the HTML. You can. Do you know about any tags in HTML? HTML script, script, script P A B. What is P tag? P for paragraph. And A B U L वो सब table TR TV TD. okay. And if I want to enter user information in my HTML page, which tag do you use? Information. अगर मुझे यूजर से कोई इनपुट लेना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मैं कौन सा टैग यूज करना है? इंफॉर्मेशन लेना है तो मैं यूज़र की इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हूँ। मेरे पास यूज़र का नाम मैं डलवाना चाहती हूँ। मैं यूज़र से सब पूछना चाहती हूँ कि आप किस नेशनलिटी में हो, या आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, या डेट डलवानी है। मैं क्या यूज़ करूँगी HTML के अंदर? उसके लिए तो डेट पे जाना है तो उसके लिए डेट टैग लगता है। HTML में डेट टैग होता है। Okay, so tell me about the CSS. In this you write it here. You have done CSS also, right? Yes, ma'am. What is CSS? Client side server CSS. Okay. Do you know the style sheets? Yes, ma'am. Style sheets is we use to decorate page design for page. Okay. All right. Thank you, Ritu. Thank you, ma'am. For coming.